हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर गोटे नुआ चैप्टर आरंभ करवा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या कहवा, मैट्रिक्स टा आम केमती लिखिबा। आम यदि किसी एलिमेंट रो किंबा कॉलम वाइज ए बोला स्ट्रक्चर भीतर लिखिले ता कहले मैट्रिक्स। ए ब्रैकेट यूज करि परिबा, ए ब्रैकेट यूज करि परिबा। ए ला रो जो एलिमेंट गुडी को हॉरिजॉन्टल लाइन था ता कहले रो, जो एलिमेंट वर्टिकल लाइन था ता कहले कॉलम। तो मैट्रिक्स का कहले ना, ये मैट्रिक्स is a rectangular array arranged in numbers, arranged of numbers in rows and column called matrix। बुझला? तो मैट्रिक्स का कहले a matrix is a rectangular array arranged of number in rows and columns is called matrix। बुझला बेले तो मैट्रिक्स का कहले ना, जो मैट्रिक्स को आमे ए बोला स्ट्रक्चर भीतर लिखुचे। स्ट्रक्चर भीतर रो रहउचे और कॉलम रहउचे, रो रहउचे आ कॉलम रहउचे। से जे रो और कॉलम रहउची आमे एटा को लिखिबा, एटा को लिखिबा रो क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम। रोड सपोज m नंबर ऑफ रोज आसला, n नंबर ऑफ कॉलम आसला, तो ए मैट्रिक्स ना देला m क्रॉस n मैट्रिक्स। This is called order of matrix. This is called order of matrix. Division लिख करिबा rows into columns. Suppose m number of rows, n number of columns. असला m cross n order. m cross n order of matrix is m cross n. The first letter m indicates number of rows and the second letter n indicates number of columns। तो कौन कहले मैट्रिक्स? The matrix is a rectangular array arranged of number in rows and columns is called matrix। If there are m rows and n columns, if there are m rows and n columns, is called m cross n matrix or order of m by n matrix, called m by n matrix। In m cross n matrix, the first letter m indicates the number of rows and the second letter n indicates number of columns। For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here, this matrix contains the elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here, two rows, row 1, row 2. Here, number of rows 2, row 1, row 2. Number of columns, column 1, column 2, column 3, column 4, column 5. G5. Here the matrix contains number of rows 2 and number of columns 5. The order 2 cross 5. Here first letter A, here m is 2 and then third point, matrix is denoted by capital letter,
such as A, B, C, D. But actual matrix are enclosed in a parenthesis. This is called actual matrix. Here suppose matrix A having the elements 1, 2, 3. Here number of rows 3, number of columns 1. ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା types of matrix. First पढ़िबा row matrix. रो मैट्रिक्स का कहबा ना जो मैट्रिक्स रे गोटे रो थिबो कॉलम ते धाउ तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n is called row matrix. The matrix of order 1 cross n is called row matrix. For example, A matrix 1, 2, 3. Here number of rows 1 cross 3. Row 1. कॉलम भैरी करि पारे रो किंतु भैरी करिवो नाही. बुझले तो मैट्रिक्स A equals 1, 2, 3. Here number of row 1 and number of columns 3. Another example, suppose B matrix having the elements 1, 5, 6, 7. So 1 cross 4. That is the row matrix. So row matrix का कहबा the matrix of order 1 cross n is called row matrix. Then column matrix. Column matrix का कहबा ना the matrix of order n cross 1. The matrix of order n cross 1 n cross 1 is called column matrix. For example, 1, 2, 3. जो मैट्रिक्स रे गोटी कॉलम थिबो रो वेरी करिवो कि जो मैट्रिक्स रे गोटे कॉलम थिबो ता कहले कॉलम मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross 1 is called column matrix. Suppose matrix A having the elements 1, 2, 3. Here number of rows 3, number of columns 1. The order of matrix is 3 cross 1. बुझिला Then third, square matrix. Square matrix का कहबा ना जो मैट्रिक्स रे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. रो संख्या जति थिबो कॉलम संख्या सेति थिबो ता कहबा स्क्वायर मैट्रिक्स. A matrix is said to be a square matrix A matrix is said to be a square matrix if the number of rows
is equals to number of columns. Number of columns. For example, here a matrix have the elements 1, 2, 3, 4. Number of rows 2, number of columns 2, the order of matrix 2 cross 2. 4. Next asla unit matrix. Unit matrix का कोई बात? Unit matrix is a square matrix. Unit matrix is a square matrix means number of rows is equal to number of columns. जितनी row संख्या जितनी थी वो column संख्या सेती थी वो. Unit matrix a square matrix is said to be a unit matrix if so unit matrix का कोई बात? The square matrix is said to be unit matrix if the elements from main diagonally left top to right bottom are ones and rest of elements are zeros. तब कोई यूनिट मैट्रिक्स का कोई ले ना यूनिट मैट्रिक्स ला उड़े स्क्वायर मैट्रिक्स मेन डायगोनली सब एलिमेंट 1 है थिवे बाकी दो एलिमेंट 0 थिले तब बोले यूनिट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a unit matrix if the elements from left up to right bottom are ones and rest of elements are zeros. It is called unit matrix. It is denoted by I. It is denoted by letter I. Next पढ़ेगा null matrix. Number 5 null matrix. null matrix का कोई बा जदि मैट्रिक्स और सब जो एलिमेंट को 0 होइतिबे ता कहले null matrix if all the elements in a matrix are zeros is called null matrix. तो null matrix का कहले ना जदि गोटे मैट्रिक्स सब एलिमेंट 0 तब कहले null matrix if all the elements in a matrix are zeros called null matrix. Null matrix are of any order. Null matrix are of any order. बुझला पढ़ लेगा
diagonal matrix. डायगोनल मैट्रिक्स का कहवा ये मध्ये गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स ये मध्ये गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स किंतु मेन डायगोनली एलिमेंट 0 हेबेनी रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स सब 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 एटा मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल अब बोले मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स का कहवा ना जो मैट्रिक्स रे मेन डायगोनल रो एलिमेंट दिको 0 हि नथिबे बाकी दिको 0 हिथिबे ता कहले डायगोनल मैट्रिक्स A square matrix is said to be a diagonal matrix if the all elements of main diagonal are not zeros and rest of elements are zeros. तो डायगोनल मैट्रिक्स का कहले जो मैट्रिक्स रो मेन डायगोनल एलिमेंट ते को 0 हिरथिबे बाकी ते को एलिमेंट 0 हिथिबे ता कहले डायगोनल मैट्रिक्स आउटे कंडीशन कोन डायगोनल मैट्रिक्स जे कोनसी गोटे एलिमेंट 0 ही पारे मेन डायगोनल रो जे कोनसी गोटे एलिमेंट 0 ही पारे फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 0 0 0 0 2 मेन डायगोनल रे गोटे एलिमेंट 0 होई पारे किंतु मिनिमम कंडीशन दीटा एलिमेंट 0 हेबे नाही ता बोले डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर then scalar matrix scalar matrix is a unit matrix scalar matrix is a square matrix sorry scalar matrix is a square matrix if all the elements from left up to right bottom are equals and rest of elements are zeros if all the elements from left up to right bottom or main diagonally are equals and rest of elements are 0 is called scalar matrix. For example, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एटा गोटे यूनिट मैट्रिक्स ये मध्ये गोटे स्केलर मैट्रिक्स आ मेन डायगोनली सब एलिमेंट्स इक्वल अब बोले स्केलर मैट्रिक्स अनदर एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ये मध्ये हला गोटे स्केलर मैट्रिक्स मेन डायगोनली लेफ्ट आउट टू राइट बॉटम सब एलिमेंट इक्वल रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स सब 0 ता बोले स्केलर मैट्रिक्स क्लियर एबले किछि क्वेश्चन करिवा फर्स्ट कोन कहिथिली मैट्रिक्स काउ कहिवा सेकंड कहिथिली टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और कहिथिली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बुझलो तो मैट्रिक्स का बोलथले the matrix is a rectangular array arrays of number in rows and columns if there are n rows and n columns the matrix is called n cross n matrix the n cross n is called order of matrix the first letter n indicates number of rows and second letter n indicates number of columns then types of matrix write two examples
of row matrix. Two examples of column matrix. Write two examples of row matrix and write two examples of column matrix. के कोई करिवो just ये बोले 1 2 3 4 5 6. Here number of rows 1, number of columns 1 2 3 4 5 6. रो मैट्रिक्स का कहबा ना जो मैट्रिक्स गोटे रो थिबो कॉलम संख्या जा थाउ ना काहेकि नंबर ऑफ रोज 1, number of columns, here number of rows 1, number of columns 6. This matrix is called row matrix. Another example 1 9 10. Number of rows 1, number of columns 3. Row matrix. Example of row matrix. Second, two examples of column matrix 1 4 6. column matrix का कहबा ना जो मैट्रिक्स में गोटे रो थि गोटे कॉलम थिबो आ डिफरेंट नंबर ऑफ रो थिबो ता कहले column matrix. here number of columns 1, number of rows 3 cross 1. the matrix of order m cross 1 is called column matrix. Second example 1 0 5 6 7. here number of rows 5, columns 1. These are the two examples of column matrix. Third पढ़ेगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. Transpose of matrix. Suppose a matrix A having the elements 1 2 3. ट्रांसपोज इसका कहबा सपोज गोटे मैट्रिक्स एलिमेंट अछि 1 2 3 तार ट्रांसपोज लिखिबा a to the power t और a dash और a complement a to the power t और a dash केन बात करिबा ना रोडा को रो और कॉलम को इंटरचेंज करेबा तले 1 2 3. here number of rows 3, number of columns 1. here number of rows 1, number of columns 3. हो आज एति कि बही प्रॉब्लम करे पिला माने नेक्स्ट क्लास रे पढाइबा बाकी क्वेश्चन हो.